Okay, I have started recording and okay, now let me show you something regarding the problem statement in different theses. So right now you have one draft thesis in front of you. It is related to the CSR, okay, corporate social responsibility से related है. ये पूरा कंट्रोल चल रहा है. By the way, it's a PhD thesis, okay. तो इस वजह से काफी लेंदी होती है PhD की thesis. इसमें देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है. क्या कह रहा है देखिए, मैं आपके लिए क्विकली इसको रीड कर देता हूँ बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्गर वन. Hopefully it will be of around 3 to 4 pages or more than that. Wow, ठीक है. It's quite lengthy. Six to seven pages problem statement, by the way. So what does it say? What is the whole story about this particular research? Let me read for you guys. वैसे normally जो जब shorter version जो होता है research papers में उसमें explicitly तो नहीं होता problem statement, लेकिन actual में वो introduction के साथ ही जो चीजें discuss हो रही होती हैं वही part of the problem statement होती हैं, ठीक है ना. तो मैं आपको इसको एक quickly read करके भी बता दूंगा तो भी अच्छा खासा टाइम लग सकता है इसमें. बहरहाल I am trying to read all that. क्या कह रहा है कि irresponsible business and economic activities create harmful threats to the environment and human lives. Both developed and developing countries are no exception to dealing with the social and environmental issues arising from irresponsible activities. Nevertheless, the developed countries were deemed to have a low level of pollution despite their intense use of resources. Hart 1997 claimed that the low level of pollution in developed countries was due to a number of factors such as stringent environmental regulations, greening of industry, and relocation of most polluting activities to the developing countries. Stringent regulations have made it costly for global firms to operate in developed countries. Okay, and the reference is given. Then, consequently, many of these firms move their manufacturing facilities from developed to developing countries. Furthermore, several economic factors such as low operating cost, high unemployment rate, and the lack of regulation or enforcement of any existing regulation in developing countries have also influenced the global firms' decision for such relocations. The relocations of manufacturing facilities to developing countries have yielded a number of social and environmental problems. For example, poor employee welfare, climate change, and transfer of occupational health problems from a developed to developing country. These problems have called for more emphasis to be given on CSR in developing countries. तो पूरा background बता दिया क्या कह रहा है. अब उसमें क्या research हुई है? A number of studies describe the exploitative working conditions such as unsafe or hazardous working condition, child labor, low wages, and excessive working hours, which are apparent in the global supply chain plants. These have urged the global firms to embrace CSR to address these matters. The global firms seem to take advantage of developing countries' low wages and weak social and environmental regulations to manufacture low-cost products at the expense of the local employees' welfare. तो मसला क्या है कि जाहिर सी बात है कि जो भी इश्यूज आ रहे हैं, चाइल्ड लेबर का मसला आ रहा है, एनवायरमेंटल हैजार्डस एनवायरमेंटल कंडीशंस वगैरह आ रही है, ये सब का मसला ये है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेवल लो है. इस वजह से एम्प्लॉयमेंट लेवल लो होने की वजह से लोग मजबूरी में काम करते हैं, तो वहाँ पे लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स इजीली बन जाती है, ठीक है. और एक्चुअल में क्या होता है कि एम्प्लॉयज की जो वेलफेयर है उसका इशू आ रहा होता है. दिस कैन बी सीन इन अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ sweatshop practices that capture public attention, including जो भी इसके अंदर रेफरेंस दिया है. फॉर एग्जांपल, Nike, a dominant player in the athletic footwear industry, has been criticized for sourcing its products in factories and countries where low wages, poor working conditions, and human rights problems were rampant. Nike has been confronted with issues such as underpaid employees in Indonesia, child labor in Cambodia and Pakistan, poor working condition in China and Vietnam.
To tackle these issues, Nike monitors its compliance with a corporate code of conduct and make changes to supply chain governance from an arm length market model to a collaborative partnership between the global firms and their suppliers. ठीक है, Nike का issue पूरा. Nike also empowered their suppliers to better schedule their work in order to improve quality and efficiency of operations. Engagement in various forms of public relation activities, including CSRR, has also been undertaken to restore its public image. जाहिर सी बात है कि जब ये सारे इश्यूज मीडिया हुए तो उसकी पब्लिक इमेज खराब हो गई कि यार नाइकी देखो इतना बड़ा नाम है और ये चाइल्ड लेबर करवा रहा है, अंडर पे कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज को बैड वर्किंग कंडीशन में काम करवा रहा है और वैसे इतने महंगे शूज बेचता है, उतनी बड़ी कंपनी है स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर देखा जाए तो. In terms of environmental aspect, the deforestation crisis, which occurred as a result of rapid urbanization and other development activities such as economic infrastructure, has led to a number of environmental degradation threats for instance climate change and pollution. Compared with the Americas and Africa, Asia was found to have the most immediate concern with regards to the deforestation crisis due to the low volume of surviving forest health and higher relative rates of deforesting and lodging into the region. ठीक है, फिर दूसरा environmental issue deforestation, जंगलात को काट के urbanization की जा रही है, नई नई आबादियां वहाँ बनाई जा रही हैं. इसका ज़्यादा जो मसला है वो ईस्टर्न वर्ल्ड में है, वेस्टर्न वर्ल्ड से, यानी कि स्पेशली एशिया के अंदर बहुत फास्ट हो रही है डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, जंगलात को काट के इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, शहरों को आबाद किया जा रहा है. द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, उसका मसला क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है. इसके इशू को एड्रेस करने के लिए स्पेशली एशिया लाइज इन इट्स ग्रोइंग थ्रेट टू पब्लिक वेलबींग. ऐसी बात है, द राइजिंग क्लाइमेट टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच एज ड्राफ्ट. जाहिर सी बात है कि ड्राफ्ट आएगा, कहर जिसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइफून्स आएंगे. ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, चीज़ें एनवायरमेंटल चेंजेस have caused a numerous problem. For example, disturbance to or loss of ecosystem diversity का मसला आ गया, increased rise of risk of flood का मसला है, then vulnerable areas and climate related disease outbreak, cholera होता है, hepatitis, malaria वगैरह, ये climate से related चीजें होती हैं, डेंगू वगैरह. क्लाइमेट खराब होगा तो वहाँ पर ही आएंगी. Several pollution problems have also arisen following the inadequate planned urbanization and development activities. For example, the release of toxic gases as a result of industrial transportation activities to the atmosphere has caused air pollution problems such as acid rain and haze. Improper waste treatment out of the economic development activities has also led to water and land contamination problems. ठीक है, अब देखें ना, एसिड रेन होती है, इसमें एसिडिक गैसेस आ जाती है. ठीक है, हेज होती है जिसमें ऐसा पॉल्यूशन होता है, ऐसा स्मोक होता है, धुआं होता है, इसमें बहुत सारे गैसेस होती है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है. Therefore, careful attention is needed to manage these problems to avoid further exacerbation of existing environmental situation. This is to ensure the environmental sustainability for the future generation. तो भाई क्यों ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है कि हमें फ्यूचर जनरेशन को सेव करना है. एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर अगर हम रहेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी. आगे बहुत सारे मसाइल आएंगे, क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स आएंगे, तूफान आएंगे, कहर आएगा, बीमारियां आएंगी, बहुत सारे इशू आएंगे. वाटर और लैंड कंटेमिनेशन आएगा. ठीक है, पानी खराब, जमीनें हमारी खराब हो जाएंगी. एज अ डेवलपिंग कंट्री, अब मलेशिया की बात कर रहे हैं, मलेशिया शेयर अब उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं. चैलेंजेस विद regards to social environmental problems, for example, rapid economic development that occurs in the country accounts for a high percentage of water pollution, even in the presence of effective technologies and policy measures. Researchers have detected the presence of microorganisms, suspended particles, and chemical constituents such as ammonia, manganese, and mercury in Malaysian rivers, especially in the industrialized states of Selangor, Johor, Penang, and Perak. ठीक है जी. Then आगे कह रहा है कि all of these cases necessitate corrective action to ensure the supply of clean water for daily use and the minimization of health problems related to the contamination. ठीक है, पानी का मसला, इसको सॉल्व करना जरूरी है. Furthermore, aggressive deforestation activities for the purpose of agriculture, lodging, and urbanization in Malaysia have impacted the growing number of environmental problems. ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है, एनर्जी कंजम्पशन were found to be related positively to economic development in Malaysia. Malaysia has reported an increase in carbon emission by 221% from 1990 to 2003. 13 साल में 221% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बढ़ चुका है मलेशिया के अंदर. And the country is ranked among the world's top 30 greenhouse gas emitters. Okay. Such growth is dictated despite Malaysia's participation in Kyoto Protocol that aims to combat global warming and initiatives to use renewable energy and minimize emissions. Okay. Then release of greenhouse gas emissions into the atmosphere has caused the increase of climate temperature. जाहिर सी बात है कि जब गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में इमिट होंगी तो फिर टेम्परेचर का मसला, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होगी and led to changes in overall climate unpredictable ways. These global warming and climate change phenomena have consequently triggered the occurrence of flood, hurricanes, heat waves and drought. ठीक है, हमारे यहाँ पर भी जो सब चीजें आ रही हैं, फ्लड का मसला, तूफान, कहत हमारे यहाँ आता है, हीट वेव्स आती है, ये सब मसला है क्योंकि हम मलेशिया से भी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मलेशिया से ज़्यादा हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को भी इमिट कर रहे हैं हम लोग. इसके अलावा वाटर पोल्यूशन हमारे यहाँ पर है और अदर पोल्यूशन भी मौजूद है. तो मलेशिया हैज एक्सपीरियंस सेवरल एपिसोड्स ऑफ फ्लड significantly in Kuala Lumpur and other states in 1971, 2003, 2006 and 2011. The incidents tend to occur more frequently in cities and towns such as Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru. As a result, poor urbanization management, the frequency of such incidents may disturb the city's function, threaten human lives, and damage properties. Several flood mitigation projects have been introduced, particularly in Kuala Lumpur. For example, the Klang River Basin Flood Mitigation Project and the Stormwater and Management and the Road Tunnel Project. However, the continuous episode of flooding over the years, particularly in Klang Valley, have called for re-evaluation of the existing flood prevention system. अब देखें, इसने बताया कि भाई ये important क्यों है इस वक्त इशू, इसको क्यों सॉल्व करना है. A number of landslide cases has also been reported in Malaysia as a result of irresponsible development activities, including Genting Highland Slip Road near Karak Highway in 1995, which caused 48 deaths. Bukit Antara Bangsa Selangor in 1930, 1999, 2002 and 2008. And Kampong Sungai Ruil near Birchang in Cameron Highlands that reported 16 and 7 deaths respectively in August 2007. As the number of landslide cases increasing, serious attention should be placed on minimizing the problems, requiring efforts from both firms and regulatory bodies. इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम्स है सारे डेथ्स हैं, ये इनको भी सॉल्व करने की जरूरत है. ठीक है, डिफोरेस्टेशन की बात कर रहा है, डिफोरेस्टेशन के बाद सोशल एस्पेक्ट की बात कर रहा है और मजीद इसने एग्जांपल्स दी हैं. और अल्टीमेटली जो है वो जहां पर इसने एंड किया है तो उसने अपनी प्रॉब्लम को अल्टीमेटली किस तरह से पोज किया है वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो लास्ट के जो दो पैराग्राफ, फॉलोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ board experience in following the experience of importance of board experience in directing directors decisions and influencing the firm performance, more efforts are warranted to investigate the impact of board CR experience on CSR are disclosed by the firms. CSR reporting is together. And perhaps the appointment of board members with CSR experience could assist firms in implementing CSR activities and reporting them to stockholders. यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ मेंबर्स CSR से रिलेटेड होंगे, उनका CSR का एक्सपीरियंस होगा, तो वो कंपनी को इस चीज पे गाइड कर सकेंगे कि उनको CSR एक्टिविटीज कैसे करनी है. ठीक है ना. तो वो ऐसे अपॉइंटमेंट्स करेंगे जिसमें एटलीस्ट जो है वो ऐसे लोग हों जो उनको CSR से जो है वो आइडिया हो CSR का. Such appointment may also be used by the firms to improve their strategic posture and be regarded as socially responsible. और अच्छे अपॉइंटमेंट करेंगे तो कंपनीज जो है उनको ये समझा जाएगा कि ये सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका स्ट्रेटेजिक पोस्चर एक अच्छा जाएगा. ठीक है. ओवरऑल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट गवर्नेंस मैकेनिज्म
such as ownership structure, board of director regulation may have different influence over the levels of CSRR disclosed. ठीक है, अब कह रहा है कि ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे गवर्नेंस मैकेनिज्म की, जैसे कि जैसे कि ओनरशिप स्ट्रक्चर की बात करें या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेगुलेशन की बात करें, वो तो अपनी जगह पर इम्पेक्ट कर ही रहे होंगे. एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन द एसोसिएशन बिटवीन द डिफरेंट governance mechanism and the level of CSRR disclosure may highlight the important roles, क्यों यानी कि क्या फायदा होगा, important roles of governance mechanism in influencing the levels of CSRR disclosed. ठीक है, तो CSRR की जो डिस्क्लोजर होगी, जब गवर्नेंस मैकेनिज्म अच्छा होगा तो ही वो CSRR के डिस्क्लोजर पे इम्पैक्ट करेगा. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वाइटल is to ensure the continuous development of CSRR. ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग की कंटिन्यूस डेवलपमेंट होगी, पर्टिकुलरली इन मलेशिया. ठीक है, ये पूरी इसने स्टोरी क्रिएट की, पूरा इसने बैकग्राउंड क्रिएट किया, पूरा बैकग्राउंड बताया, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बताया, क्यों इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को हल करने के लिए. और ये कॉर्पोरेट बोर्ड जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट बोर्ड के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि उनको CSR का पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इससे कंपनी को क्या फायदा होगा. पूरी स्टोरी इसने जो है वो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर बता दी. ठीक है ना. आप चूंकि BBA के लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतना लंबा नहीं होता, शॉर्टर होता है, लेकिन इट्स अ PhD थीसिस, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ एक्सटेंसिव द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज. इट इज अ परफेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाय द वे. ठीक है, सो ये एक एग्जांपल थी आपके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की. बाकी भी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं जो मैं आपको सरसरी तौर पे दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए. ये भी बेसिकली अकाउंटिंग से रिलेटेड है. शो हो रही है ना आपको सुहेली की, सुहेली शमीमी की. आर यू एबल टू सी दिस? कंसल्टिंग रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स. ओके, इसको सरसरी तौर पे हम लोग देख लेते हैं, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इट्स ऑन पेज नंबर 5. प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. ठीक है, और इसका जो कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट गोइंग ऑन. क्या कह रहे हैं? Consistently, due to high risk environment, the consulting paradigm of internal audit would possibly be sought and encouraged. As a result, the management's demand for internal audit with regard to the risk management may be better. Further, organizations that promote for aggressive strategies may also request for consulting services from internal auditors. To date, studies that provide empirical evidence on new role of internal auditors in consulting is still in infancy stage. ठीक है, अभी भी मतलब ग्रो कर रहे हैं, अभी तो बेसिक स्टेजेस पे हैं. द नीड फॉर सच अ रिसर्च इज क्रिटिकल कंसिडरिंग द recent changes in the definition of internal auditing that embrace the consulting aspect of internal audit scope of work. There is a possibility that internal auditors currently reform in their consulting work due to current business operations that are more complex and deal with the uncertainties of growth opportunities. However, still internal auditors need to have firm specific knowledge and experience in order to deal with those business risks that would contribute to the future investment of the firms as well as the performance of the organization for interest, profitability, efficiency. To summarize, this present study is timely in providing the much needed empirical support on the consulting role of internal auditors and its influencing factors. Hence, the study
on the impact of implementing consulting roles on the firm's growth opportunities and performance is significant since it has not been tested in prior studies or most limited. Nonetheless, internal auditors face the balancing act of dual roles, consulting and assurance, and stress of to do more with less, for example, blended engagement issues, which is essence in this situation is a motivation of present study. In the following section, the details about the gap of the study are discussed. Basically, it is about what drives the author to conduct the research or internal audit with business बिजनेस कंसल्टिंग डायमेंशन. अब इसमें क्या किया है कि इसने पहले ऑडिटिंग के हवाले से कि क्या ऑडिटर्स इंटरनल ऑडिटर्स को क्या इश्यूज आ रहे हैं उनकी जो भाई मारो मुझे मारो. हेलो जी, होपफुली कि आप लोगों ने कुछ पार्ट जो है वो मेरा सुन लिया होगा क्योंकि बीच में इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने दोबारा से इसको अपने मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया है. तो बेसिकली जो है वो मैं रिकॉर्ड कर चुका था सारी चीज़ें, तो अब ये जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी. तो आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माय लेक्चर